Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 50 for that topic, some basic principles and techniques of the organic chemistry. Now we have been learning regarding the reaction mechanism, which is very important part from this topic. After learning the types of fission, now we have to learn the types of reagents. But it will be better to first know what is substrate and what is reagent. Whenever the reaction occurs between two different substances, the one to which we are keeping in the observation, that will be generally called as substrate, and the other substance is called as reagent, isn't it? Suppose that these two reagents, two species are reacting, A plus B giving C plus D. Yeah, C, what it may be. Okay. Now here, if we are observing A, what are the changes going on in A? Then A will be called as the substrate and B will be called as the reagent. Now in organic chemistry, organic compounds are mostly the substrate. Okay. Substrate कौन होगा organic reactions में? Organic compounds. And the other substances will be termed as the reagents. Just consider the reaction here. Suppose we write the reaction like this: CH2 double bond CH2 plus, suppose I take here HCl. Then what will I get? I will get one hydrogen will go to CH2 to form CH3 and chlorine will go to CH2 to form CH2Cl. So this is the product. अब यहाँ पे ये जो इथिन नाम का सब्सटेंस है, you might have seen this reaction in the earlier standard, and this is hydrogen chloride, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, तो ये एडिशन रिएक्शन हो गया. टाइप ऑफ रिएक्शन में तो हम जाएंगे तो उसको एडिशन कहेंगे. बट हियर द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इथिलीन एंड दैट इज कंसिडर्ड एज ए सबस्ट्रेट. उसे हम सबस्ट्रेट कहेंगे. ओके, and HCl will be known as a reagent. Okay, ध्यान में आ गया. So कभी कभी बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाता है MCQ, हमें लगता है सब स्टैंडर्ड है, पर आ सकता है. That in following reaction who is considered as a substrate. अब ये reaction का कुछ प्रॉब्लम नहीं है. But suppose that I have written the reaction like this, that this is benzene. Okay, this is the benzene and then this is CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड. ओके, इसे हम बाद में देखेंगे बेंजीन के टॉपिक में. इसे फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन कहते हैं. अनहाइड्रस AlCl3 वगैरह वहां पे कैटलिस्ट लगता है. अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड. इन बेंजीन टॉपिक वी विल लर्न दिस रिएक्शन. अब क्या हो जाता है देखो, पर्टिकुलरली CH3 विल गो हियर in the form of that group adding to the that substituting the hydrogen there. ये डबल बॉन्ड में ऐसे लिखा है तो भी चलता है. This is CH3. Okay, plus HCl will be lost. Now earlier I told you in the organic chemistry reaction, organic compound should be considered as the substrate. जैसे कि यहाँ पे हो रहा है. Organic compound is ethene, that is substrate, and the other substance will be considered as reagent. Okay, सही है. पर अब यहाँ पे दिक्कत आने वाली है दूसरे रिएक्शन में. Here there are both the substances organic compounds. Benzene is also organic compound, methyl chloride is also organic compound. ये benzene है, ये organic compound ही है, and methyl chloride is also organic compound. ओके, तो यहाँ पे आर्बिट्ररीली हम कह सकते हैं ये टोल्यूइन नाम का प्रोडक्ट आ जाता है. ओके, मिथाइल बेंजीन. ठीक है. नाउ इन दिस रिएक्शन हु इज रिएक्टेंट, हु इज सबस्ट्रेट, सो दैट कैन बी डिसाइडेड आर्बिट्ररीली, पर्टिकुलरली द सब्सटेंस ऑन विच वी आर फोकसिंग, on which we are just observing what changes are going on, where the carbon-carbon bond will be formed there, or where carbon
हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी ब्रोकन, लाइक दैट. ये जिसके बारे में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी जिसकी रिएक्शन है, जिसकी शादी है, isn't it? That will be considered as what you say that substrate. तो यहाँ पे कौन सबस्ट्रेट माना जाएगा? बेंजीन. कोई कहेगा जो बिग है वो सबस्ट्रेट, दैट इज आर्बिट्रेरली डिसाइडेड, एंड दिस विल बी द रिएजेंट. दिस विल बी द रिएजेंट. ये रिएजेंट हो जाएगा. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इवन दो यू विल रिवर्स दिस, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा. हम कहेंगे अभी जैसे शादी में जाते हैं तो पर्टिकुलरली दैट फ्रॉम विच साइड यू आर गोइंग, दैट इज इंपॉर्टेंट, isn't it? तो वैसा ही है यहाँ पे. So particularly in organic compounds, whenever both the organic compounds are taking part in the reaction, then in that case the organic compound on which we are focusing, on which we are observing the changes, that will be considered as substrate and other is reagent. Okay, I hope you have got this. Okay, now the next thing which we have to learn here is the types of reagent, which is very, very important. That there are two types of reagent in the organic chemistry reaction we are watching, and they are very important fundamental part. That is, remember, one is called as nucleophile, other is called as electrophile. Types of reagents which are taking part in the organic chemistry reaction. Two types, and they are exactly opposite to each other, I will say. One is known as nucleophilic reagent and other is known as electrophilic reagent. Nucleophilic and other is electrophilic. Okay, तो ये क्या है हम देखेंगे. We'll just go for that. What is this actually? Nucleophilic and electrophilic. या उसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक reagent or nucleophile. My friend, nucleophile, the name itself is indicating the meaning there. Nucleophilus means loving. Okay, so nucleophile means nucleus loving या nucleus seeking, न्यूक्लियस की खोज में जाने वाला. ओके, फिलस का मतलब आता है loving or seeking. Okay, and that's why it is called as nucleus seeking. न्यूक्लियोफिलिक और फोबिया जो रहता है उसे हेट कहते हैं. फोबिक अगर वर्ड आता है, हाइड्रोफोबिक यानी वाटर का जिसको हेट्रेट है वो. तो किसी को अगर अट्रैक्शन नहीं है हमारे बारे में, ओके, but at least nobody should have phobia for other, phobia for me. Okay, nobody should hate me. ऐसा बर्ताव हमारा होना चाहिए. ओके, तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का मतलब क्या आता है. अब न्यूक्लियस को कौन सा चार्ज है बताओ. व्हाट चार्ज इज देयर ऑन न्यूक्लियस. न्यूक्लियस हैज गॉट पॉजिटिव चार्ज. सो पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन करने वाला कौन होगा. No doubt the negatively charged species. Okay, and therefore we can say that a nucleophile or nucleophilic reagent is that which is negatively charged. Negatively charged species or electron rich species. Electron rich species or the atom or group, that species I will say again, having lone pair of electron. A lone pair of electrons, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की पेयर है, or a species which can donate electron. Species that can donate electron pair, जो अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर दान कर सकता है, डोनेट कर सकता है, दैट विल बी नोन एज द नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, स्पीसीज हैविंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
or species that can donate electron pair. Very simple. यानी यहाँ पे कौन आएगा ऐसा? अभी बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ यहाँ पे. Particularly I will say that OH minus. OH minus में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की पेयर है एक्स्ट्रा. So that will be called as a nucleophile. Then Cl minus, Br minus, I minus, Cn minus. Okay. ये जो है they are all known as what? They are all known as nucleophiles. इनको निगेटिव चार्ज है. Negatively charged anion will be known as nucleophile. सिंपल है. या जिसको इलेक्ट्रॉन रिचनेस है, the one who is having richness of the electron, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर हम लेते हैं अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन है, वो क्या है, उसको इलेक्ट्रॉन की पेयर है एक्स्ट्रा. या हम लेते हैं अमाइन, RNH2, this nitrogen will have lone pair of electron. Or if we take R2NH, it is also having lone pair of electron. Or R3N, that is also having lone pair of electrons. So all these will be the examples of what? That nucleophilic reagent which can donate electron pair. And thus that can attack on the positively charged center. इसको जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो देखे क्या कर सकता है? इट कैन अटैक ऑन पॉजिटिवली चार्ज सेंटर यानी न्यूक्लियस. पॉजिटिवली चार्ज सेंटर या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर. वो खोजते रहेगा किसको मेरे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. ओके, electron deficient center, and then it will attack on that. Okay, so I hope you have got this clear idea about the nucleophilic reagent. In the next lecture we will learn electrophile or electrophilic reagent. Till then, take care, do like and share this video, and do watch next video to learn about electrophilic reagent and examples of that. Thanks a lot.